Hi guys, so I make a friend. I am from Andhra Pradesh. My name He's is from Vasu. Andhra Pradesh. And And Vasu, what do you do? I am doing Indian Railways, Jet Railway. Oh, Easy nice. water. So we became friends and he clicked so many pictures for I am me. so excited to friendship with Aisha. Very nice girl, really so brave. Actually, एक आदमी आएगा केरला से, दिल्ली से केरला, really अच्छा है. Thank you. Old is gold. हर एक चीज के पीछे फीलिंग जुड़ी रहती है, छुपी रहती है. वो तो है. Hello guys, welcome back to my channel, and here I'm walking into my office for the day. Yes, my office is at 35,000 feet in the sky, so let's go with me. So you must be wondering where I'm going. So I'm going to Trivandrum. After 3 hectic sectors we reached hotel. हाँ, आप ऑर्डर कर लो पहले. This is the hotel. ये होटल है और ये this is the washroom. And yes, I want to go somewhere, so I'll get ready. So I got ready here. So I'm wearing suit because I'm heading to a temple. Hello guys, welcome back to my channel. So right now I'm on the way to Ajmara temple और मुझे अच्छा लग रहा है. Alright guys, quick update from the road. Right now I'm on the way to Ajimala Shiva temple, and guess what? I'm going solo today. So we were actually 5 crew members who planned to go together, but everyone suddenly became very sleepy. Some of them were not feeling well, and one of them, she's going with her friends. So, and I was like, no, I'm going. I have to go, so I'm going alone because mujhe. So here I am, the only one who decided to go on this little adventure. And instead of booking a cab, I took an auto because honestly, auto rides make the journey more fun. मैं पहुंच गई हूँ, अभी जा रही हूँ मंदिर के अंदर. I'll show you. So guys, I finally reached. I wanna give one travel tip. If your friends are sleepy, just go without them. Don't wait for them. From Gujarat. Right now I'm standing in the queue to get the temple coupon. The ticket is about 100 rupees. This girl was giving a carry bag to keep the mobile phone inside because photography or videography is not allowed inside. I don't know, she has a lot of questions. She asked me where are you coming from and all. मैं तो सोच रही थी she is going to take my interview now. There's a one statue over there. I love Azimala Shiva temple. I took lot of picture over there. तो गाइज अभी मैं केव टेम्पल से बाहर आई हूँ, जिसके लिए हमने 100 रुपीज़ का कूपन लिया था. अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ही पीसफुल था. अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी, और सबसे ख़ास जो मुझे लगा वो अर्धनारीश्वर का रूप. अगर आपको पता नहीं है, अर्धनारीश्वर में भगवान शिव और माता पार्वती की एक ही शरीर में दिखाए जाते हैं, आधा शिव और आधा शक्ति. दिस सिंबल डिस्क्राइब्स दैट मेल एंड फीमेल एनर्जी साथ मिलकर ही पूरी सृष्टि को बनाती है. ऑनेस्टली गाइस, अंदर का माहौल बहुत ही शांत था. थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे बाहर की सारी भाग दौड़ रुक गई हो. कभी कभी कैमरा बंद करना भी अच्छा होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती है, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं. कुछ जगह कैमरे में नहीं दिल में कैद होती है, और सच में वो मुझे मेरे दिमाग और मेरे दिल में छा गया, वो केव टेम्पल अर्धनारीश्वर. अब मैं आगे आपको मंदिर का बाकी हिस्सा और वो फेमस जाइंट शिवा स्टैचू भी दिखाने वाली हूँ. मैं अकेले आ गई, कोई क्रू नहीं आ रहा था, मैं अकेले ही आ गई. यार आई डोंट नो मैं कैसे आ गई यहाँ, बट देन वही है ना कि मतलब भगवान बुलाते तो आप खुद को रोक नहीं सकते.
तो वही मेरे साथ हुआ कि मतलब मुझे लगा कि नहीं मुझे जाना है, मैं आ गई, अकेले ही आ गई। इट्स लाइक कि कोई प्लान नहीं था, इट्स जस्ट कि मुझे जाना था, मैं आ गई यहाँ पे। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट फीलिंग सो ब्लेस्ड। एंड देखो मेरे पीछे जामी माला टेम्पल फाइनली। यह लगभग 58 फीट ऊंची भगवान शिव की स्टैचू है और इसके पीछे अरेबियन सी की वेव्स, पूरा व्यू बिल्कुल मैजिकल लगता है। ये रहा बीच जो अरेबियन सी का है एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। नाउ आई एम गोइंग टू द बीच, लुक एट द बीच व्यू। यहाँ भगवान शिव को गंगा धारा फॉर्म में दिखाया गया, मतलब उनकी जटाओं से माँ गंगा निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो खींचना यहाँ पे अच्छा नहीं आएगा फोटो। यहाँ से एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, आप मंदिर में खड़े हो और सामने समुंदर है, ऐसा लगता है जैसे वेव्स भी भगवान शिव को प्रणाम कर रही हैं। इतनी शांति, पॉजिटिविटी और चारों तरफ सिर्फ समुद्र और भगवान शिव। अभी मुझे समझ आ रहा है कि लोग इतने दूर दूर से यहाँ क्यों आते हैं। अगर आप भी कभी त्रिवेंद्रम आए तो आजीमाला शिवा टेम्पल ज़रूर आएँ प्लीज़। नॉट ओनली टेम्पल, दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हर हर महादेव। यहाँ पे जब आप खड़े होगे ना तो आपको समझ आएगा, यहाँ भगवान शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, पूरे समुद्र के साथ खड़े हुए महसूस होते हैं। आकर देखो एक बार, फील करो। I'm here at the beach near Ajimala Shiva temple and honestly this view is unbelievable. Yes, I couldn't resist dipping my feet into the water. Just look at this, perfect for chilling after exploring the temple. You know, sometimes travel is not just about monuments or statues, it's about moments like these, feeling the water, listening to the waves or just being happy. And yes, I tried to act all graceful while dipping my feet, but the waves had other plans. I might have screamed a little, okay, maybe a lot. Oh, so I thought you visited here. No. मुझे सीखना है। Person is swimming. I make vlog. Just capturing memories, enjoying the sea and honestly wishing I could stay here forever. So guys, just wanna say if you visit to Kerala, do visit this temple. This is amazing, has all greenery. Never ever trust a wave. It will attack your feet when you least expect it. So yes, sometimes the best part of the trip is just to fit in the water and no schedule. Har Har Mahadev. Alright guys, so the adventure for today is slowly coming to the end. It's already 5 o'clock and the sun is setting. So I'm heading back to my hotel before it gets completely dark, as I am alone here. That's why I'll show you the cave temple from outside. As you can see the temple, whosoever girls who do not know this, if they are in period they cannot visit all this south temple because it's not allowed, it's strictly prohibited and it's written on the board also. If you are in your monthly period you should not visit these temples. Today has been amazing, from exploring the cave temple with Lord Shiva and Ardhanarishwar to seeing the giant Shiva statue and finally chilling at the beach, dipping my feet in the water. It's been one beautiful, peaceful day for me. The devotees were playing song in Malayalam only. I couldn't understand. So I'm enjoying very much. I came here also. I'm going to buy banana chips and I also came for shopping. Sarika in Kerala.
Look at these colors and designs. Each sari is handmade. So much banana chips are being made fresh. This gentleman showed me how they slice the bananas, fry them to perfection and turn them into these crispy golden chips, and trust me, the smell itself is amazing, you know. I couldn't resist trying one, and honestly I think I just found my new favorite snack. Fresh banana chips straight from the makers. Absolutely delicious. पूरा ट्रैफिक है मैं सिटी This side bus station. This is railway station. Kerala. It's little experience like these that make travel so special. You don't just see places, you see culture, the food, and the people behind it. I reached to my room, and after reaching my room, I was starving, so I came down for buffet. After eating, I checked myself. Alright guys, I'm all ready for my next departure. If you liked this video, please don't forget to subscribe, like and share it with others. Your motivation really keeps me going and it inspires me to keep uploading more travel vlogs for you. Bye bye for now. I'll see you in next video with other adventure. Bye.